Good morning students. We have completed the poem Daffodils जोटा कि चार चार्टा स्टांजा थिला काली हमें कंप्लीट कर दीचु. देन आज आम तार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा जोटा कि किछि बुक रे अछि आ किछि एडिशनल क्वेश्चन जोटा कि हमर काउंसिल पैटर्न रो सेटा को भी मु किछि डिस्कस करबी. ठीक अछि. तो मु फर्स्ट क्वेश्चन लिखिबी देन ताको आंसर लिखिबी ताको आंसर को देन मु एक्सप्लेन कर देबी. तो स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. When did the poet see the daffodils? First question. When did the poet see the daffodils? कोठारे कवि daffodils गुडी को देखिथिले? Answer. The poet saw the daffodils when he was moving about aimlessly as a floating cloud. केतेबेले कवि डैफोडिल्स गुडी को देखिथिले जेतेबेले सी एकुटिया भाबरे बुलुथिले भसा बादल परी सेतेबेले से डैफोडिल्स को देखिथिले. जदि एठी मूविंग अबाउट जे चाहिबो मूविंग अबाउट ता बदलले भी एठी वंडरिंग लिखि परिबो रोमिंग लिखि परिबो. व्हेन ही वाज वंडरिंग एमलेसली एज ए फ्लोटिंग क्लाउड और ही वाज रोमिंग अबाउट एमलेसली एज ए फ्लोटिंग क्लाउड. देन सेकंड क्वेश्चन. Question number 2. Where did the poet see the daffodils? कोठारे से daffodils को देखिथिले? The poet सब बेले आंसर टा क्वेश्चन रो ही रिलेट करबा. एठी जेमति एठी गला जे where did the poet आसले did अछि सेति में the poet saw the daffodils हला. सब बेले क्वेश्चन रो रिलेट करके आंसर टा लिखिबो. where did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils beside the lake and beneath the trees. जेमति कि एठी अछि जे कोठी जे देखिथिले द पोएट सॉ द डैफोडिल्स बिसाइड द लेक हदकुळ रे एवं गछर तळे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट रिजेम्बलेंस डज ही फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स? से दीटा भितर कोन सदृश्यता देखि पारिथिले? व्हाट रिजेम्बलेंस
What resemblance does he find between the stars and daffodils? से कौन से रिजेम्बलेंस टा से देखिया को पाइथिले? He finds the resemblance between the stars and sorry एठी द छाड़ दी the daffodils is one of countlessness. कौन से सदृशता देखिया को पाइथिले ना अगणित जेमिति डैफोडिल्स गुडी को अगणित थिले सेमिति स्टार्स गुडी को तारकापुंज गुडी को भी अगणित थिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the poet say about the number of flowers? poet एठी कोन कहिसंती फ्लावर्स नंबर विषय रे. what does the poet say about number of flowers? तो जमती कि मु कहि 10,000 आइसा जोटे कि हाइपरबोलिक एक्जेक्टली 10,000 नुहे बट सी एठी कहि चंती जे 10,000 त हम आंसर रे भी सी 10,000 ही लिखिबा. द पोएट, what does the poet say about the number of flowers? The poet says about the number of flowers that he saw $10,000 flower at a glance. से कहती जे सी 10,000 पाखापाखि फूल देखिया को पाइथिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, where were the flowers? जोटा कि से ऑलरेडी रिपीट है सच क्वेश्चन. where did the poet see the flowers? जहाँ आंसर where the flowers, same answer. The next question, which of the two dance more sprightly? Which of the two danced more sprightly? It option देछि जे the waves or the daffodils.
waves or the daffodils. किए जीवंत भाव द वेव्स व्हिच ऑफ द टू डांस्ड मोर स्प्राइटली किए नाचुथिले जीवंत भली जेमति कि दीटा ऑप्शन देछि दे किए सुंदर भाव नाचुथिले द daffodils danced more sprightly than the waves. The daffodils danced more sprightly than the waves. के जीवंत भाव नाचुला ना daffodils नाचुला जीवंत भाव waves मानक ठारू. जदि को क्वेश्चन रे डाउट रहे बुझिबा मु तो बुझे दोची जदि डाउट रहे आउथरे हमर आउथरे मु ताको लिखि सारला परे आउथरे मु ताको बुझे दे जोटा कि मु ऑलरेडी स्टैंजा रे बुझे सारिची. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट फील व्हाइल लुकिंग एट द daffodils? How does the poet feel while looking at daffodils? आ तुमर जो काउंसिल एमती क्वेश्चन आसीबो तार पैसेज दिया जाइथिबो ताको पैसेज को देखि तुमको आंसर लिखि अछि जेतो डाउट आसीबो जे तुमर मने पड़नी सेतोले पैसेज को देखिबो आ एई मु तो आंसर लिखि दोची जदि तुमे किछि चाहिबो सेते ऐड करिया पई तो सेते ऐड भी करि परिबो. न जे हाउ डज द पोएट फील व्हाइल लुकिंग एट द daffodils? While looking at daffodils, the poet was beside himself. से तांको पाखरे थिले से जेतोले तांको पाखरे द पोएट वाज beside himself with joy. खुशी रे से तांको निज सहित निजे थिले and could not think a sight of daffodils, a sight of could not think a sight would prove to be
immense pleasure would prove to be a source of immense pleasure to him and immense pleasure to him. While looking at the daffodils, जेतबेले से देखिथिले the poet was beside himself, से तांको निज सहित थिले with joy खुशी अनुभव करथिले and could not think, से भाबी पारु नथिले a sight would prove to be a immense pleasure to him and feels his entire body, entire mind, feels his entire with joy. जे तांकु से जो खुशीटा he feels his entire mind with joy. Then come to next question. What happens? No, sorry. How does color? Then what happens to the poet when he lies on his couch? What happens to the poet तांको कौन हेइतला जेतबेले कि से तांको काउच रे आउजी पडिथिले when he lies on his couch the lovely picture of the daffodils flashed upon his inward eye जोटा कि तांको अंतर्निहित दृष्टि and fills his mind with joy. When he lies on his couch, the lovely picture of the daffodils flashed upon his inward eye and fills his mind with joy. जेतो से आउजी पड़ी थांती तांको मन तांको आखि सामना रे जोटा कि से दृश्यटा सुंदर दृश्यटा तांको आखि मनर आखि को आसी था तांको मन आखि झलसी जाई था तांकर पूरा मन आनंद रे परिपूर्ण हेई थाए. The next question. Next question, mention the two moods of the poet. Mention the two moods
of the poet. Data mood कौन थिला जोटा कि when he lies on his couch in a vacant or pensive mood. तो ये से आंसर तो लिखा जिवो the two moods of the poet are vacant mood which is free from thought which is free from thought means blissful mood जोटा कि ताको मन रे किछि भावना न थाए free from thought and the pensive mood which is sad or thoughtful mood. गोटे कौन जोटा कि खाली मन जोटा कि which is free from thought कौन सी भावना न था and the pensive mood which is sad or thoughtful mood गोटे है चिंता मग्न अवस्था आउटे चिंता शून्य अवस्था रे ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जे डू यू फाइंड ए राइम स्कीम इन द पोएम द राइम स्कीम ऑफ द स्टांजा इज ए बी सी सी काली गोटे पिला जो डाउट थिला जे कि कहले जे मैडम राइम स्कीम त बुझी पालेनी ए बी कोन सी सी कोन तो जीवा स्टांजा को सेटा बुझे दोची जोटा लिखा है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स द फर्स्ट वर्ड अछि क्लाउड देन अछि हिल्स ता माने क्लाउड हला ए हिल्स हला बी when all at once I saw a crowd एठी क्लाउड सहित क्राउड रा आसिला तेनु क्लाउड एंड क्राउड हला ए that floats on high over hills and hills a host of golden daffodils तो it hills and daffodils same रहिला तार प्रोनाउंसिएशन हो कि तार एस हो जहाँ भी प्रोनाउंसिएशन भी सेम आउची एस भी सेम आउची तो it एस जो हला रहला बी then beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze trees and breeze एटा भी प्रोनाउंसिएशन सेम होची तो एठी हला सी सी तो ए भाबरे राइम स्कीम हला ए बी सी सी तो आज ये रखा जे आज जी बहिर क्वेश्चन थिला बहिर जी अच्छी माने डैफोडिल्स क्वेश्चन से ऑलरेडी मुझे डिस्कस कर सारी द नेक्स्ट क्लास आर जो एडिशनल क्वेश्चन हम काउंसिल कि काउंसिल पैटर्न किसी क्वेश्चन जोटा कि पैसेज रु बाहर करी से क्वेश्चन को काली से डिस्कस करवा ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू